Let's look at this question. It says the diagram shows a curve with equation this. The minimum point on the curve has coordinates this, and the x coordinate of the maximum point is b, where a and b are constants. Okay, the first thing that the question asks you to do is it asks you to state the value of a. When it says state का मतलब ये होता है कि आंसर जो है वो ऑलरेडी आपके सामने है, आपने इसे स्टेट करना है, कोई कैलकुलेशन उसके लिए जनरली रिक्वायर्ड नहीं होता. So आप कहेंगे कि if I look at a is like a x intercept कैसे निकलते हैं? y की वैल्यू को 0 रख के, तो मैं 0 को रख देता हूँ 0 equals to x into x minus 2 square. तो जाएगा either x equals to 0 और x minus 2 equals to 0. So x equals to 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. Does this make sense to everybody? फिर वो कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b. कैलकुलेट उसने कहा 4 मार्क के लिए, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. b के बारे में हमें क्या पता है कि b इज द coordinate of the maximum point. When I think about the maximum point, फौरन से मेरे दिमाग में stationary point आता है, और stationary point क्या होते हैं? When dy by dx जो है वो equals to 0 होता है. Okay, तो पहले मुझे dy by dx निकालना पड़ेगा. So I start thinking about how do I calculate dy by dx. Okay, पहले मुझे terms expand करनी पड़ेंगी. x square minus 4x plus 4 x cube minus 4x square plus 4x dy by dx. dy by dx निकालना है तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा. ये हो जाएगा 3x square minus 8x plus 4. सही. तो when I do that, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी. तो मुझे बता देगा x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी? टू and 2/3. Are those the two values of x? सर सही आ रही हैं वैल्यूज आपकी. ओके, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हम कहेंगे 2/3, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आ चुकी है वहाँ पे. सही है. एक मिनट यार. Okay, part C, find the area of the shaded region. अब shaded region के लिए क्या करना पड़ेगा? This is area between the curve and the axis. So what I'm going to do is I'm going to integrate from 0 to 2. पूरे कर्व को इंटीग्रेट करूंगा dx. सही है. अब हमें भी पता है कि भाई इंटीग्रेशन भी ऐसे नहीं होती जब तक अलग अलग टर्म्स ना हो. तो जो इसकी एक्सपेंशन थी मैंने उसकी एक्सपेंशन की जगह लिख दिया. ये बना x पावर 4/4 minus 4x cube over 3 plus 4x square over 2. 0 to 2. सही है. विद लिमिट्स एक्सपैंड कर दिया मैंने. यही हमने कल सीखा था. 2 power 4/4 minus 4 into 2 square over 3 plus 2 into 2 square minus 0 power 4/4 minus 4 into 0 cube over 3
plus 2 into 0 square. Can someone do a final calculation for me and tell me what the answer is? Four upon 3. So yeah, so the area under the area of the shaded region is 4 upon 3. यहाँ तक सबको clear है? Any questions? No? Can we move on? Now, this is something that does come up rarely on the exam, but this is part of the syllabus I need to teach you. What I want to show you before I teach you this is कि ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या था. यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये क्या लिखा होता था. Area between the curve and the x-axis bounded by the lines x equals to a and x equals to b. ये area between the curve and the x-axis था. What if you have an area that is not between the curve and the x-axis, but it's between the curve and the y-axis? यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो जैसे आपके पास ये सवाल ये कर्व है y equals to f of x दिया हुआ होता है नॉर्मली, और मैं आपसे ये वाला एरिया कैलकुलेट करने को कहूँ. अब what you need to understand is कि अगर मैंने यहाँ पे a और b लिखी हुई हैं limits, तो these are the limits of y, right? Limits of y हैं ये. तो मेरी इंटीग्रेशन भी जो होनी चाहिए वो in terms of y होनी चाहिए. So instead of a function of x, I'm going to write a function of y and I'm going to write dy in front of it. क्यों? क्योंकि मेरी लिमिट्स y की हैं तो मेरी इंटीग्रेशन भी y की होनी चाहिए. I cannot suddenly convert this into an integration on x. You cannot switch it at will. There has to be a process. Sometimes it's possible to switch, sometimes it's not possible to switch. So yeah, and when it's not possible to switch, you shouldn't force through it. You should just try to integrate on y. सही है. अब जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस फॉर्म में नहीं होते कि आपके पास कोई फंक्शन ऑफ y हो. You generally have a function of x. So you sometimes need to do the changing the subject thing. And we'll talk about that in a bit when we see questions. Okay. This says find the area bounded by the curve with equation this and the y-axis as shown in the diagram. Right? Now I want to find this shaded area. तो पहला सवाल ये आता है कि भाई मेरी limits क्या होंगी? What are my limits? And say that my limits are 0 to 2. ये किसकी values हैं? ये y की values हैं. So I need a function of y and dy. Can you tell me if this is already a function in y? Is this a function in y? Yes, no, maybe. Yes, sir. It's a function in y already. मुझे y को अब integrate करना है, मुझे x को integrate नहीं करना. सही है? So that is what I'm going to do. I'm going to integrate in terms of y. Y square minus 2y dy. So हो गया y cube over 3 minus 2y square over 2. सही है?
Oh, yes, this is what I'm doing it something. Okay. 8/3 minus 4. कितना आ रहा है? Minus 4/3. So area कितना हो जाएगा? 4/3. This question also tells you something about the nature of the area. Okay, if the area is on the left hand side of the y-axis, the definite integral will be, जो हमने पहले भी पढ़ा था, about area below the x-axis. तो ये वैसे concept है. I don't want to go into depth on this because this is something that's not generally tested in depth. So yeah, and you have to be a little more flexible about addressing questions on these. So yeah, new idea. Please make sure that you understand this. I'm now integrating on the y-axis rather than on the x-axis. Okay. Sir, how to calculate this on a calculator? ये कौन पूछ रहा है? Hassan. हसन देखो हसन कैलकुलेटर में तो अब जाहिर सी बात है कैलकुलेटर में तुम देखोगे तो तुम अगर ये वाली साइन लगाओ ना तो dx ही लिखा हुआ. Do you know how to do a normal integration on a calculator? Yes. तो देखो dx ही लिखा हुआ होता है. अब you cannot change the calculator to dy, but आपको पता है ना कि वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता. वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता तो आप यहाँ पे अभी भी यही लिखते हैं x² minus 2x dx और आप वही लिमिट्स लगा दें 0 to 2, वो आपको आंसर -4/3 देगा. Okay, sir. Okay. Thank you. सही है. Now this one. Now we're talking about area between two curves. सही है. Area between two curves. Now a lot of people have a lot of different ways of thinking about it. सही है. कुछ triangles निकाल के और different shapes बना के वो सब आपने पहले किया हुआ होता है. सही है. यहाँ पे मैं I'll try to keep the ideas as simple as possible and I hope they will work in all questions. Generally they do work in all questions. Sometimes they do get a little complicated, but आप किसी भी method से करने जाएं तो कहीं complications create होती हैं. सही है. अब when I'm talking about area between two curves मुझे ये वाला area निकालना है. सही है. So what I need is a. एक तो ये बात है कि मुझे limits पता होनी चाहिए. Let's call this the value of a and let's call this the value of b. सही है. ये लिमिट्स तो मुझे चाहिए होंगी. पहले मुझे बताओ ये लिमिट्स कैसे आएंगी. How do I find the x coordinates of a and b? Simultaneously solve कर लें. सही है. Simultaneous solve करने से आ जाएंगी लिमिट्स. एक मिनट. हम simultaneous solve कर लेते हैं. किसको? लाइन और कर्व को. तो हो जाएगा 2x plus 7. सर माइनस है वो -2x होगा. अच्छा सॉरी -2x. इसको ऐसे नहीं करता. सही. तो y की जगह y लगा दूंगा. ये हो जाएगा x minus 2 square plus 2x plus 7 equals 7.
सही है, तो ये -1 आ गया और ये आ गया 3। सही है। अब आप लोगों ने एड मैथ में डिफरेंट तरीकों से सीखे होंगे। आई डोंट माइंड इफ यू डू दैट एज लॉन्ग एज यू डूइंग इट करेक्टली। बट आई जनरली सेज कि देखो, दो काम हो सकते हैं कि एक, पहले मैं ये पूरा एरिया निकाल लूं। सही है। अब इस पूरे एरिया को निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप लाइन को इंटीग्रेट कर दें 1 से 3 तक, या आप इसमें आपको नजर आ रहा है कि भाई सर ये तो ट्रिपीजियम बन रहा है, मैं तो ट्रिपीजियम का एरिया निकालूंगा, दैट्स योर कॉल। सही है। और करना क्या है कि भाई अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे वाला एरिया आ जाएगा और फिर हमें बड़े एरिया में से छोटे एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं सिंपल सा आपसे ये कहता हूँ कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट एरिया between two curves, it's simply above minus below dx। above minus below का मतलब क्या है कि इन द शेडेड रीजन आप ढूंढने कि आपका ये शेडेड रीजन अगर है तो इसमें क्या लाइन अबव है या क्या लाइन ये कर्व बिलो है। तो मैंने कहा कि दिस इज अबव एंड दिस इज बिलो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं अबव वाले की इक्वेशन पहले लिख दूंगा। व्हेन आई एम राइटिंग डाउन द इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट 7 minus 2x और बिलो वाले की इक्वेशन बाद में लिख दूंगा x minus 2 होल स्क्वायर। एंड मैं लिमिट्स क्या लगा दूंगा, मैं लिमिट्स लगा दूंगा -1 से 3 तक। सही है। नाउ आई नो फ्रॉम my calculations कि I can simplify this first and then integrate 7 minus 2x। यहाँ पे अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा -x² plus 4x plus 4। तो मैं पहले अलजेब्रा कर लेता हूँ, फिर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, या मैं इंटीग्रेट भी कर सकता था डायरेक्ट। इट्स अप टू यू। So ओके, -4 नहीं? -4 सॉरी। Okay, sometimes it's easier to simplify, sometimes it's easier to do directly, that's up to you। Okay, so above minus below is what works when area is between two curves, or one line and one curve, or two lines and so on। Clear है यहाँ तक? Can someone tell me the final answer to this? This is a past paper question। देखें, you can, it's probably going to be 6 marks, but you can bring it down bring down the solution to easier numbers। Anyone with a calculation, please? 32/3. 32/3। 3. सबको समझ आया? Above minus below, that is what our rule is going to be for the next few slides। I'm going to use this repeatedly, so I am requesting that you get used to this idea regardless of what you've done in the past। Okay, past वाली understanding सही है, मुझे कोई मसला नहीं है, questions में use करना चाहें करें, but this is how I'm going to explain it for the next few slides। Okay, पहले ये वाला देखते हैं। ये कहता है the function f is defined by this: find f bar of x and f double bar of x and hence verify
that function f has a minimum value at x equals to 0. Okay. So part 1 करते हैं. Find f bar of x. So f bar of x is 2 plus x minus 1 say that's f bar of x and f double bar of x. Say and hence verify that the function has a minimum value at x equals to 0. So simple. अब देखिए इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में करने की कुछ आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपने करना भी नहीं है. Having a 6 positive therefore minimum. चार लाइनों का सोल्यूशन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा पेज दिया हुआ होगा, कोई मसले की बात नहीं है. ओके. फिर वो कहते हैं the points A and B lie on the curve this as shown in the diagram. Find the distance AB. ओके. डिस्टेंस AB निकालना है तो ये भी सिंपल सी बात है. 2.25 minus 3 square 1 plus 0.5 square. Can someone tell me the answer to this? Can we quickly get an answer out of this? 1.68. 1.68. Okay. Okay. Now find showing all necessary workings the shaded area for 6 points. What do you notice about the shaded area? It's trapped between two curves. Okay, it's trapped between two curves. So what I immediately think about is it should be above minus below. ऐसा ही होना चाहिए. अब above वाले की equation मेरे पास नहीं है. I know that there are 2 points. Can I quickly get through the equation? क्या मैं equation बना सकता हूँ? Okay. Y minus y1 m times x minus x1. Do we all understand this? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने इक्वेशन निकाली है जिस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे. सही है. अब मैं क्या कहूँगा? आई एम गोइंग टू से above minus below with limits what? With limits 2.25 and minus half. सर 1 नहीं होगा. Oh, sorry, 1. I'm so sorry. 1. सही है. X coordinates लिखना होता है.
minus half and 1. Minus half and 1. So above minus below. Above is minus x over 2 plus 2.75. And below is what? Below is 2x plus x plus 1 power minus 2. इसको थोड़ा सा expand कर देता हूँ मैं. अब add subtract करना आपकी choice होती है, करें ना करें, that doesn't matter as long as you are integrating each term that is required to be integrated. ये बन जाएगा minus x square over 4 plus 2.75x minus 2x square over 2 and you put in the limits. सही है. अब एग्जामिनर को आपने लिमिट्स इंसर्ट करके दिखानी है. सही है. What I feel convenient is कि हाफ और वो लिखने की जगह मैं इनको डेसिमल्स में लिख देता हूँ because immediately तो मुझे कैलकुलेटर के ऊपर ही रखना है. I don't have to do them manually, so I don't really put any numbers that are fractions यहाँ पे. Okay, and I think you should do the same so that it's easier for you to calculate. Can someone come up with the final answer, and can the rest of you please confirm if you understand all of this? 1.69. 1.69. सर जैसे अभी आपने निकालते हुए दोनों को मतलब एक साथ रखा है, अगर हम दोनों को अलग अलग भी निकालें और फिर माइनस करें बाद में तो आंसर सेम ही आएगा ना? आंसर सेम ही आएगा बिलाल. देखो लेकिन what I'm doing is I'm saving time in doing those calculations, right? And अभी तो इस क्वेश्चन में तुम्हें नहीं नजर आया ना. अब पिछले क्वेश्चन में जैसे तुम्हें नजर आया था ना कि कुछ टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होके कम हो गई थी. So I'll be integrating fewer terms then. अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग था तो इसमें ज्यादा टर्म्स थे क्योंकि 6 मार्क्स भी थे. But you'll see that the advantage of this in some questions, yes, it's not always an advantage. So yeah. Now, some of you may have done it differently. पहले कोई दूसरा तरीका बता सकता है मुझे? ट्रेपेजियम में से एरिया बिलो द लाइन माइनस कर. Below the curve. बस. सही है. कुछ लोग कहते हैं कि सर ये सिर्फ कर्व को इंटीग्रेट कर लें, लाइन की इक्वेशन तो बनी हुई भी नहीं है, बनाने की जरूरत भी नहीं है, इस कर्व को इंटीग्रेट करें तो ये वाला एरिया आ जाता है और फिर आप एक ट्रेपेजियम निकाल लें और उसका एरिया निकाल लें. यू कैन ऑल्सो डू दैट. मार्किंग स्कीम में आपको वो भी हुआ हुआ नजर आएगा. बट द आइडिया इज के एवरी टाइम यूल हैव टू चेंज योर थिंकिंग कि कब मुझे ऐड करना है, कब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दिया हुआ है, दैट इज अबव माइनस बिलो. You just have to see the curve and you have to decide that it's above minus below. Right? Let's look at this question now.
So the diagram shows the curve y equals to this. The curve has a maximum point at A and a minimum point on the axis at B. The normal to the curve at C meets the normal to the curve at B at the point D. Okay? Normal to the point B at the point D. Find the coordinates of A and B. What do I do for the first part? If I want to find maximum minimum points, I differentiate. है और फिर मैं इक्वल्स टू 0 रख देता हूँ. कोई आंसर्स बताए प्लीज. Sir, 3 or 1. So this is 3 and this is 1. सही है. फिर से find the equation of the normal to the curve at C. तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा dy by dx at x equals to 2. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा 4 12 12 minus 24 minus 12 minus 12 plus minus 3. This is the gradient of tangent. सही है. Gradient of normal is 1 over 3. Equation of normal. Okay. Equation of normal बन गई. अब वो कहते हैं find the area of the shaded region. Now again, some people might see it differently. वो कहेंगे कि सर ये trapezium नजर आ रहा है, उस trapezium का एरिया निकालें and then sort of subtract it. मैं यहाँ पे सिंपल सी बात आपसे कहूँगा फिर से, क्या कि मुझे ये नजर आ रहा है कि this is simply and above पूरा shaded region जो है उसमें एक ही लाइन above है और एक ही लाइन below है. ये तो बेसिकली एक लिमिट है. यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी? 2. तो मैं कहूँगा कि मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ 2 से 3 तक above माइनस बिलो को. ओके. सो above नॉर्मल की इक्वेशन है, मैंने कहा कि ये बन जाएगी x प्लस 4. एक मिनट. ओके ये बन जाएगी नॉर्मल x प्लस 4, दोनों से डिवाइड बाय 3 हो रहा है. और बिलो में क्या आ जाएगा? बिलो में कर्व की इक्वेशन आ जाएगी विच इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x. सही. सारी टर्म्स अलग अलग हैं. I can also combine these terms, but I can just simply integrate them as well. Sorry. अभी मैं ओपन कर रहा हूँ सिर्फ. ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर 6, 4x ओवर 3, x पावर 4 ओवर 4, 6x क्यूब ओवर 3, 9x स्क्वायर ओवर 2. और अब इस फिल्म में से लगा देनी है मुझे 2 से 3 तक. सर डबल इंटीग्रेट क्यों कर दिया? नहीं किया. कहाँ किया? मैंने एक्सपैंड किया ब्रैकेट. ओके. डबल इंटीग्रेट कभी भी नहीं होगा वैसे. वो मुझसे एक दफा गलती हुई थी.
ओके ओके, अच्छा आपने सारा मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने ओपन किया ब्रैकेट माइनस की साइंस को अकोमोडेट करने के लिए। सही है। सही है। अब आपका काम जो है वो सिर्फ कैलकुलेटर पे लिखना है, तो आप लिखें कैलकुलेटर पे। सही है जी। If someone can come up with final answer. 17/12. अच्छा, एक मिनट रुक, मुझे एक और चीज देखने दो। आए, ये यूं एक कर्व बना हुआ है। Okay, there's this one curve that looks like this, and there is another curve that looks like that. और मैंने आपसे कहा है कि आप जो है वो मुझे ये शेडेड एरिया निकाल के दिखाएं। सही है? Let's call this g of x and let's call this f of x. तो पहली बात तो ये एलिमेंट a b हो जाती है, एलिमेंट a हो जाती है। अब मुझे बताओ आप क्या करूंगा? Do I need to do something different or can I follow the same idea? सर above minus below और आ तो जाएगा उससे above आंसर? minus below। यहाँ से आंसर आ जाएगा। जी सर। Wouldn't matter that the area was below the x-axis. Some of this area is below the x-axis, right? जी फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ेगा उसके अंदर। क्या फर्क पड़ेगा? सर बिलो द जो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो क्या करूँ अब? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने आपको तरीका सिखाया है ना, that will automatically take care of the negatives and the positives in the problem. सही है? It's still going to be above minus below. वो because both areas are negatives, they sort of cancel out they don't cancel out each other. वो आपस में subtract होके आपको shaded area दे देते हैं। And when two areas are again both positive and negative, तो फिर वो automatically सारा इसके अंदर handle हो जाता है। You don't need to split up the area. आपने यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं लगाना कि जी इतना एरिया नेगेटिव है इतना एरिया पॉजिटिव है। You just have to simply say कि it's still above and still below and we are using this limits to find the area between the curves. So क्योंकि essentially आपने curves को subtract कर दिया है ना, the axis has become irrelevant to you. Okay? That will make sense if I do a very detailed calculation on breaking down the area and then doing it. But we don't need to go down that road. Actually split जो करना पड़ेगा वो पहले यहाँ से करना पड़ेगा, फिर यहाँ से करना पड़ेगा। और मतलब 3 स्प्लिट्स में अगर मैं निकालूंगा तो आपको नजर आएगा कि सर जो है वो ये जो करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं। ओके, सो एसेंशियली दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर कि इट्स ऑलवेज अबव माइनस बिलो। क्लियर?